Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from the Hindu and the Indian Express. So these are two important newspapers for the examination. And the USP of this initiative is that I try to cover the news in the pointer format and the coverage is holistic so that you can easily answer the question in prelims and mains examination. So let's get started. So these are the list of the topic for the day. Today is 17th of November. The first topic is Vulture Action Plan 2025, which has been recently released by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The second is Kochi Mangaluru Pipeline. This is again an important pipeline initiative. The third is Moderna vaccine efficacy. The claim has been there from Moderna that the vaccine is 94.5% efficiency. I'll tell you the details about that. And the fourth topic is 12th BRICS Summit. And the last topic is need for the data policy framework, right? So this is something which are the important news and editorial of the day. Apart from this, I'll be also discussing some MCQs question at the end of this video and the explanation of yesterday questions, right? And those of you who are looking forward for the mains assessment program via test series, so we are offering a test series program. So what you have to do, you have to check the description section of this video where you can get the additional discount. The coupon code is applied, so you can avail the benefit out of it. So do check the description and register yourself. Now the first topic is Vulture Action Plan. This has been reported in the Indian Express. And this is an important news both for your prelims as well as mains examination. So talking especially about the mains examination, it is important for your general studies paper 3, and in prelims examination this question tend to be very important, right? So the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, they have launched a Vulture Action Plan that is 2025 for the conservation of vulture in the country. Or vulture population की अगर बात करें तो it has drastically reduced in the country. So what government is trying, एक protection एक action plan बनाई गई है जहाँ पे जो vulture की जो total population है उनको save किया जा सके. Now the vulture number has shown a steep slide. As much as 90% of the species were found in India, but नाउ एज ऑफ नाउ अगर 1990 की अगर बात करें तो जो ड्रास्टिक डिक्लाइन थी जिस टाइम पे ये बर्ड की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी वल्चर की, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया था इंडिया में. एंड वेल द मिनिस्ट्री हैज़ बीन कैरिंग आउट द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट सिंस 2006. ऐसा नहीं है इंडिया में पहली बार ये कोई एक्शन प्लान बनाई गई है. दे आर ऑलवेज दे ऑलरेडी ट्राइड इन 2006, बट बहुत ज़्यादा इस प्रोग्रेस में सक्सेस नहीं मिली है. सो दैट इज़ द रीज़न जो डिक्लाइन पॉपुलेशन है उसको एक्टिवली एक विजन प्लान के थ्रू गवर्नमेंट ने लाने की कोशिश की है. एंड द एंटायर एम इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वल्चर इन इंडिया, राइट? नाउ कमिंग टू द स्पीसीज ऑफ वल्चर इन इंडिया, दे ऑल आर फाउंड. So there are 9 recorded species that are found in the India. First is the oriental white-backed. Second is long-billed. Third is cylinder-billed. Fourth is Himalayan red-headed, Egyptian, Beards, and Cinereus and Eurasian griffon. So these are some of the important species of the vulture that are found in India. And between 1990 to 2007, अगर बात करें जो 3 सबसे ज़्यादा critically endangered species थी, they were the oriental white-backed, long-billed and the cylinder-billed vultures. So what you can do, you can Google the images of these vultures so that you get an idea कि कौन से vulture के बारे में बात हो रही है. तो इट वुड बी वेरी इजी. दिस इज़ अ ट्रिक दैट आई एम टेलिंग यू कि कोई भी अगर इस तरह के वल्चर्स के नाम आए तो आप उनके इमेजेस गूगल पे जा करके गूगल इमेज सर्च कर ले, सो दैट यू गेट अ ब्रीफ आइडिया कि किस तरह से उनकी मोर्फोलॉजी है. नाउ 99% ऑफ द स्पीसीज आर हैविंग वाइप्ड आउट. अगर बात करें नंबर ऑफ रेड हेडेड वल्चर्स की, तो दे आर ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड. ऑलमोस्ट 91% तक डिक्लाइन देखी गई है इस पॉपुलेशन में. और इजिप्टियन वल्चर जो है दे हैड डिक्रीज बाय द 80%. And the Egyptian vulture are listed as an endangered, while the Himalayan beard and Cinereus vulture are near threatened. So these are the 2 category of vulture that are accordingly ranked in the threatened category, right? Now coming to the ban on the diclofenac करके नाम जो chemical है उसके बारे में. So diclofenac basically किस तरह की chemical substance थी जिनकी वजह से population काफ़ी ज़्यादा impact हुई है vulture की. सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक एक्शन प्लान रिलीज़ किया था जहाँ पे डाइक्लोफेनाक जो केमिकल यूज़ की जा रही थी, जो टैबलेट्स यूज़ किए जा रहे थे, जिसको बेसिकली पेन किलर के तौर पे यूज़ किया जाता था. नाउ व्हाट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वल्चर्स की वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई थी इन 2011.
and this question has already been asked by the UPSC in its prelims examination, right? नो वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी लेकर के आई है सरकार, जहाँ पे द सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड द बॉम्बे नेशनल हिस्टोरिकल सोसाइटी है, दे आर एस्टैब्लिशिंग द वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम। एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है जहाँ पे 3 क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं उन पे पहली बार ध्यान दिया गया, और जो 8 सेंटर्स हैं दे हैव ऑल्सो बीन ब्रॉट अप बाय द गवर्नमेंट वेयर 396 vulture species were successfully fledged. Now, the ministry has also launched the conservation program of red-headed Egyptian और Egyptian vultures जो हैं उनको लेकर के। Vulture Safe program is also implemented with 8 different places in the country. So अगर 2 important places की अगर बात करूँ, they are included in the Uttar Pradesh. And the action plan aims to cover already set up the ensuring the veterinary NSID regulated through the ट्रीटेड एंड क्वालिफाइड वेटनरीज। तो जो भी क्वालिफाइड वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनके सुपरविजन में दे आर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम सो दैट जो वल्चर सेफ जोन प्रोग्राम है उस पर एक सक्सेस बन सके। Now coming to the breeding centers, so government has already enacted some breeding centers. तो अगर additional breeding centers की बात करें, so they have been planned in the country, और जो vulture conservation center या sample centers हैं उनको analyze किया जाएगा, और जो center कुछ location specified की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, that include उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका and Tamil Nadu. So these are the 5 important states where the breeding center is being enacted. और 4 रेस्क्यू सेंटर भी बनाए गए हैं डिफरेंट लोकेशंस लाइक पिजनौर इन द नॉर्थ, भोपाल इन द वेंट्रल इंडिया, एंड द अदर इज गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट, एंड हैदराबाद इन द southern India. So this is basically the central India, not the ventral. So central India, Guwahati and Hyderabad, right? तो ये कुछ important regional centers हैं, rescue centers हैं where the virtual would be kept. Now coming to the other topic, that is Kochi Mangaluru pipeline. So pipeline as a concept is important for your general studies paper 3 infrastructure के specific topics आपके mains paper में mentioned है. So this become important there. Now according to the GAIL official, उन्होंने कहा है कि जो कोची मैंगलुरु की जो पाइपलाइन है that would be completed very soon. This has been delayed for a longer period. तो गेल ने फाइनली जो 540 मीटर्स स्ट्रेच थी उसको कंप्लीट किया है. दिस इज ऑन द चंद्रगिरी रिवर ऑन द नॉर्थ ऑफ केरला. नाउ इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल में आपको मैं बताऊं, सो दिस इज लाइक 444 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन दैट वाज लॉन्च्ड इन 2009, ऑलरेडी स्टार्टेड इन 2009, जहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपीज़ के साथ इसको कमिशनाइज किया गया था 2014 में, and the pipeline was charged with the Kannur and now has been left with the Kottaland in the Palakkad district. तो जो Palakkad districts है that is 90 kilometer from the Kochi where actual inception has taken place, and Kuttanad is the main junction of this process. So junctions points आपके लिए important नहीं है, but then also if you're writing anything in the mains examination it can be important. And from many lines here bifurcation of the Mangaluru and Bangalore take place. जो कोटनाड है ये bifurcation junction है जहाँ पे जो Mangaluru और Bangalore की जो junctions हैं वहाँ पे ये mix करती है. Now the first phase of the project was commissionized in the August 2013, और जो केरला की metropolitan area है that is like industrial supplies to the domestic supplies, यहाँ पे start हुई थी February by the Adani Gases. Adani, you must be knowing, Adani Gases are operating other places in the southern India as well as the western India. Now, what are the advantages of this mission? With the commissioning of the pipeline, the demand for the Kerala would touch up to 80 to 19 cubic meters, or annually this would touch up to like 60 million cubic meters, right? And apart from the environmental gains, states जो हैं they would have to get the monetary benefit होगी उनको, monetarily जो benefits हैं that would rise up to 1000 crore rupees with a way of tax alone. So सिर्फ tax से they can raise up to 1 lakh crore rupees, right? This is 1000 crore rupees. Now coming to the energy boost, this is the Mangaluru natural project. So you can see this pipeline. This is an infographic. As I told you, the main junction is at Kuttanad and the bifurcation is there at the Mangaluru and Bangalore, and the gas demand is expected to 80 to 90, and the tax gain is total 1000 crore rupees, right? And the entire district, the 8 district would be benefited with this energy project. Now Moderna vaccine efficacy. This is with regards to the COVID-19 vaccine.
इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड पेपर 2। प्रीलिम्स में भी वैक्सीन के जो नाम है और ये जिस कंट्री की जो डेवलप किया है वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So Moderna is basically from the US. The US biotech Moderna has recently announced कि जो उनके एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स थे क्लिनिकल ट्रायल्स में दैट इज 94.5% एफिशिएंट, राइट। तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 95% एफिकेसी देखी गई है इस वैक्सीन में। एंड द रिजल्ट हैज़ बिन ऑल्सो बिन इंडिपेंडेंट मॉनिटरी बोर्ड जो थी इंडिपेंडेंट मॉनिटरी बोर्ड, उन्होंने इसके बारे में रिपोर्ट बताई थी। और रिसर्चर हैज़ ऑल्सो बिन टेल दैट द बेटर वे दे हैव टू do dare to the imagine, right? And vaccine is not widely available for the months. अभी भी जो वैक्सीन को डेवलप होनी है it would take another month and the efficacy is coming because रशिया की जो अभी recent वैक्सीन है उनका they have claimed 94% of the efficacy, right? 92% of the efficacy were there from the Sputnik 2. This is exactly the number is 92, right? और Moderna is the second company जिन्होंने इस तरह के वैक्सीन क्लेम किए हैं। उससे पहले भी जो फाइजर है दे हैव सेड कि 90% ऑफ एफिकेसी इज देयर इन द फाइजर वैक्सीन। सो 3 कंपनी हैज़ बिन रिपोर्टेड। रशिया की जो स्पुतनिक है दैट हैज़ बिन रिपोर्टेड 92% और फाइजर दैट इज़ 90% एफिशिएंट और जो अभी फाइनल मॉडर्ना आई है दैट इज़ लाइक 94.5% एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द वायरस एफिकेसी, राइट। तो फाइजर जो है उन्होंने कोलैबोरेट किया था बायोटेक के साथ। दिस इज रिपोर्टेड अ वीक अगो दैट दे हैव सेड कि देयर वैक्सीन इज 90% एफिशिएंट। एंड मॉडर्ना सेड कि वैक्सीन इज अ लॉन्गर सेल लाइफ अंडर द रेफ्रिजरेशन एंड रूम टेम्परेचर एंड प्रीवियसली रिपोर्टेड शुड मेक इट ईजियर एंड स्टोरेज। बट इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं मॉडर्ना वैक्सीन को लेकर के दैट इंक्लूड I'll tell you on the later part of this video क्या क्या उसके और important concern है। पहले थोड़ा Moderna के बारे में आपको बताऊँ। This is the Cambridge based which is located in the Massachusetts and this is developed by the collaboration of research in the vaccine centers which is there in United States, right? और वहाँ की सबसे important जो institute है that is National Institute of Allergy and Infectious Diseases. So this is the apex institution working in collaboration with Moderna to develop the COVID-19 vaccines. And the company has announced that October 22 that it has completed the enrollment of 30,000 person in study और जो 25,000 participants they have already received 2 shots. So very soon we'll be coming with the 3 major vaccine, one the Sputnik 5 with the Russia, Moderna from the USA and the other is Pfizer. And India, if we talk about India, where Serum Institute of India which is also developing and the phase 3 trial has already been started. Now, what are the benefits of the vaccines? So the company produced like open door to entity with a new creating awareness और जिसमें synthetic version यूज़ की गई है इस वैक्सीन में that is used as messenger RNA और mRNA. So this would help to churn out the copies of the fragment of the virus and that fragment set also alarm to the immune system and stimulate the virus so that real should try to invade. तो जो immunogenicity है इस वैक्सीन की खास करके Moderna जो mRNA फॉर्म में है this would be more efficient to tackle the COVID-19 viruses. But we have some important concerns that has been raised by the expert. So कुछ important concerns ये हैं कि कितनी important होगी कि इस वैक्सीन को equally younger और older people के जो doses हैं उसमें क्या फ़र्क होगी। और रिसर्चर का ये भी मानना है कि जो प्रिवेंटिव पीपल होंगे आइडियली उनको किस तरह से या पेंडेमिक को पूरी तरह से क्वैश करने में मदद मिलेगी, क्या एफिशिएंसी होगी। जैसे अभी रिपोर्ट्स आई है दिस इज 94.5%, राइट। बट अकॉर्डिंगली वी हैव टू सी हाउ मोर एफिशिएंट इट कुड बी, क्योंकि जो वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, जो सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर फॉची, उनके मुताबिक अगर जो वैक्सीन 70% भी एफिशिएंट होती है तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर द कंट्री टू गो अहेड. सो ही सेड कि ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग this vaccine to be 95% efficient. So this is a very good news which is coming in terms of the Moderna vaccine, right? So another big long is the immunity that is being provided and how long the vaccine would last. The immunogenicity की अगर बात करें, जो immune पर provide की जाएगी वो कितनी long last करेगी, whether that would be a single dose or the double dose. And so far the studies to vaccine have not found the serious side effect. कोई serious side effect नहीं है इस वैक्सीन के, but also कुछ फटीग्स, फीवर, जॉइंट पेन, मसल एक्स भी रिपोर्ट की गई थी कुछ 1 या 2 वॉलंटरीज में. Now the other is 12th BRICS summit. This is like Prime Minister would be attending the BRICS summit. So this is important for your general studies paper 2 per se in the IR section. And this has been reported in the Indian Express newspaper. तो जो प्राइम मिनिस्टर है, he would be taking part in the 12th BRICS summit that would be hosted by Russia. And the theme for this year's summit is
global stability, shared security, and innovation growth, right? So this is a theme many times in examination. The themes are also been asked. So once he will share the platform with the Chinese president also, because previously भी जो आसियान की समिट थी वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर ने चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ वर्चुअली मीट किया था. सो दिस वुड बी द अनदर टाइम दैट अगेन दे वुड बी शेयरिंग द सेम प्लेटफॉर्म. नाउ व्हाट आर द अर्लियर समिट, अगर इससे पहले दो इंपॉर्टेंट समिट की बात करें तो दोनों लीडर जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एंड द चाइनीज प्रेसिडेंट दे हैव आल्सो मेट in the Shanghai Cooperation Organization, they said SCO, and Prime Minister has said that the member nation SCO should respect each other's sovereignty and territorial integrity, right? So ये इंडिया की तरफ से बताई गई थी कि जो सारे कंट्रीज हैं उनको सोवरेनिटी और दूसरे कंट्री के जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखना चाहिए एंड दे शुड बी intactly maintained so that the bilateral relationship between any two countries is not impacted. और इंडिया एंड चाइनीज सोल्जर आर इन द लैंडलॉक्ड सिचुएशन जहाँ पे स्टैंड ऑफ चल रही है ईस्टर्न लद्दाख रीजन में फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ एंड स्टिल टू कंक्लूसिव रिजल्ट हैज नॉट बिन कम. दोनों तरफ के जगह से ये बात हुई है कि दे वुड बी स्टैंडिंग ऑफ एंड फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट अभी रिसेंट टाइम्स में हुए हैं. बट जो पूरी तरह से जो डिप्लॉयमेंट थी, जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स या फिर जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं वहाँ पे सोल्जर्स ऑलमोस्ट 5,000 सोल्जर्स हैव बीन डिप्लॉयड. सो उनकी अभी तक डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाई है. Now, agenda of the summit. What would be the agenda of the summit? So, the discussion on the BRICS cooperation issues would be again the important reform of the multilateral system. UN की 75th anniversary में भी इसकी बात कही गई थी. And the summit would also discuss the measures to mitigate the impact of ongoing pandemic. Cooperations किस तरह से होने चाहिए काउंटर टेररिज्म को लेकर के, ट्रेड, हेल्थ, energy and people to people exchanges. These are some of the important agenda of the summit. And the purpose of the Russian BRICS chairmanship is 2020 that एक जो multi facet cooperation है between the BRICS nations that should be promoted and inculcated. Now the last topic is need for the data privacy framework. This is by Srivatam Ram and he talks about how a policy which is needed and the accuracy of the data is again very important और किस तरह से डेटा ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया है, राइट? So this would be in general important for the general studies paper 3. Now coming to the important point, talking about the information based technology की अगर बात करें तो information is the currently new power sharing economy और जो expansion है computing power की that has again given a new analysis and gathering. तो जो नई करेंसी है दैट ड्राइव्स एज अ डिसीजन मेकिंग एंड वाइड एरे ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर आल्सो बीइंग इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर बिहेवियर. अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो दैट हैज़ इन्वॉल्व एज अ लेटर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी और जहाँ पे 21st सेंचुरी में एक ट्रेडिशनल तरीके से जो बाउंड्रीज थी गुड्स एंड सर्विसेज के जगह पे जो कि अब बहुत ज़्यादा ब्लड होती दिख रही है. नाउ कमिंग टू द डेटा एज अ न्यू करेंसी, तो यहाँ पे डिजिटलाइजेशन की बात की गई है. जो इलेक्ट्रॉनिफिकेशन है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, दैट इज अगेन इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रीज एंड दिस रेवोल्यूशन टेक प्लेस अक्रॉस द प्रोडक्ट्स लाइक ड्राइविंग एफिकेसीज, वेरियस जो कस्टमर के जो क्लस्टर्स हैं वहाँ पे एंड द सराउंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट. दीज आर गिविंग अ न्यू रेवोल्यूशन टू द डेटा. Or and in this wheels the impetus is there that the value products using evolving the technologies. तो जो भी नए टेक्नोलॉजीज है खास करके डेटा is being considered as a currency and in the recent time or in the upcoming times the data would be such essential कि जो evolved technologies है that would be helping customer and the entire enterprises that are involved with the product sharings. नाउ वर्किंग इन द सिलोस की बात की गई है क्योंकि जो पूरे ग्रुप में जो बंचेस में काम हो रहे हैं, सो गवर्नमेंट हैज़ टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ द पीपल so that they are developing a economy as industry, because industry is something which is catalyzing in progress, because industries के बिना किसी भी जगह की डेवलपमेंट हो पाना पूरी तरह से holistic development is impossible. To address this need, various stakeholder has also been governed और specialized department भी बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से ताकि इन एरिया को स्पेशली रेगुलेट और मॉनिटर किया जा सके. And however, these departments are growing to have 10 operate in the silos, and this far as the most 20th century reasonable success that is driving economy in most of the countries, right? So technology in general, like talking about the other bilateral trade, this would be acting as a catalyzing effect.
Now, way forward की अगर बात करें in terms of attracting the investment, policies has been always in there of the subsidies and incentives, right? So that is there. And more significantly, जो technology ecosystem है, that include infrastructures, software educations, skilling, technological institutions, laboratories, testing centers that should be cultivated, because this is something that is the ultimate aim. अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इसकी जो बाइफर्केशन है या फिर इसकी जो यूजेस है वो इस सेक्टर में ज़्यादा दिखने की ज़रूरत है. एंड क्रिएटिंग द क्लस्टर ऑफ कंपनीज इन द एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एरिया would be again an ecosystem that would encourage the multi cross disciplinary learning system in the economic development. So you can see the advantages. आप इस तरह के पॉइंट्स को एग्जाम में एडवांटेजेस के रूप में भी लिख पाएंगे. And there is a larger issues to shift the value between the manufacturing and the services as a technology changes. So these were some of the major benefits as a technology and technology as a currency that can be seen in the future. Now coming to the answers of the yesterday questions. So for the first question, the correct option is C, and the explanation is that statement 1 is correct, that the Brahma Samaj had the issues of widow remarriage on the agenda much then popularized. Statement 2 is correct, that the Pandit Iswachand Vidyasagar is the principal of Sanskrit College, Calcutta, and that the widow remarriage in 1856 legalized the marriage of widow and declared that the marriages are legitimate. And Vidyasagar cited that to prove the widow remarriage as sanction to the widow remarriage. So this is from the NCERT class 12 of the Bipin Chandra. अगर आप स्पेक्ट्रम की बुक भी पढ़ रहे हैं by Rajiv Ahir, that is also a good book, right? Now coming to the second question, the correct option here is B, that the first statement is incorrect, that the PT soil contain large quantity of dead and organic matter. These accumulates and give rich humus to the content of soil, and organic matter in this soil may even be up to 40 to 50%, right? And the second statement is correct, that they are found in the area of heavy rainfall and high humidity where good growth can be seen in the vegetation. And these soils are normally heavy on black color at many places, and it occur widely in the northern Bihar, the part of Uttaranchal, West Bengal, Odisha and Tamil Nadu, right? So the details are there in the NCERT class 11th geography, the physical geography book. There you can find the detail about all these things. Now coming to the MCQs question of the day. So the first question is from the polity. Consider the following statement with reference to the executive power of the president. So all executive action of the president are formally taken by his name, and he declare any area to be the scheduled area and has a power to respect the administration of the tribal area and tribal people, right? The scheduled area and the tribal areas. So which among the following is the correct option? You have to write the correct option in the comment section, whether it is A, B, C or D. So whatever you feel is the correct answer, you can let us know in the comment section down below, right? Now coming to the second question from the culture, consider the following statement about the artistic of Bhimbetka. So the favorite color of the artist was white and red, and the painter used by the artist were made grinding the rocks and minerals. So you have to just let me know which among the following is the correct option, whether it is A, B, C or D. So whatever you feel is the correct answer, you can share that as with the comment section. And if you have any additional information with regards to Bhimbetka, that also you can write and share in the comment section down below. If you're new to our channel, do not forget to subscribe Aptly Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.